I think, sir, we may start. I am following the absentees. Okay. So let's start. We were talking about that research methodology and research method. Most of the time, a student are getting confused with means how we can go for, means what is that research methodology? What should we do in that research methodology? And what is that research method? Both are looking very similar words, and students are not able to distinguish in between that methodology and methods. Okay, so in this slide, I'll discuss that the thin difference or distinction in between that research methodology and research methods. Here, research methodology is a way to systematically solve the research problem using scientific approach, while research methods are all techniques or methods used for conducting the research. Means until now, what we have seen, that research design process, that research design process incorporates the different steps. That means identify, first of all, search the topic, identify the, formulate the problem, then collect the data, go for literature survey, then these and that like. So these are the steps which are involved in the research methodology. Okay, and research method is what? These are the steps, means within that particular steps, which kind of techniques or methods you have adopted. So that techniques are nothing but research methods. That means research methodology is treated as formulating various steps to work on research problem, while research methods are part of the research. For example, if I say that I have collected data, that means data collection is one of the steps of research methodology. But within that data collection, which technique you adopted? Questionnaire, interview, collection of samples in Excel sheet, or online collection of data, or using standard data set. These are the techniques and which are treated as a research methods. Okay, that means collect questionnaire and interview. Both are the different research methods under the research methodology of data collection. Got the difference? It is very simple. Okay. Now, this is one example of I have mentioned here, which is the copyrighted by me. Means, for example, if you want to do if you want to go for a journey or traveling from one place to another. So my source is Mumbai and I want to move to the Nagpur. Okay, so my plan is how I plan is different. Okay, means that means I need to design my plan. So what I did, what is my journey, what will be the route, what is the way of transportation, which kind of milk I will have with me, and what are the different stoppages in between the traveling. Okay, so identifying this plan, identifying these parts or steps are nothing but a research methodology. Okay, and within this journey, that means I am going from Mumbai to Nagpur. This is one part, one technique that I have used. Okay, then route. There can be two different routes, via Aurangabad, via Jalgaon. So if I have selected Aurangabad, so this is my one research method or research technique, like whether I am going to use support vector machine or I am going to use neural network. So selecting that classification technique, one classification technique is a research method or research technique. Okay, in the similar way, transport either I may go for public, private, or my car, bus, or train or flight, like that. So these are the different research method we can say. Okay, then meal either it may be homemade or we may take it from the restaurant. Okay, so these are the means either you can choose this one or you can choose this one, or you can make a hodgepodge. You can take some part from home, and if time permits or if you short with that homemade food, then you can go for the restaurant. So that will be hybrid approach also. That means most of the time researchers have clubbed the two different techniques in one particular methodology. Okay, so that may also you can do. So in this is the small distinction in between research methodology. Research methods, these are the important while performing the research. In research methods are nothing but selecting the proper research technique. That means you must justify why you have chosen that particular technique, why you have not chosen the rest of the techniques which are comparatively looking similar or comparatively providing the proper results. So you need to give that justification while
producing while selecting that particular technique. Okay, so that all research methods segregated or divided into that three parts. Research methods can be selected in the phase of data collection and acquisition. There may be a different methods, okay, like sampling, then a bag of words that you can use. You can use again trimming the words, stemming, likewise natural language processing techniques like that. Then mathematical, statistical, or scientific techniques. Just I say that support vector machine or that neural network, CNN, ANN. So these are the different techniques which are comes under that comes under this second page. Okay, and performance measures. That means these are the statistical measures for evaluating the results. So here, which kind of techniques you are going to use, that you need to select. Okay, so this is all about that research method. We will focus on these performance measures in rest of the part. While going for the research, you need to select, you need to identify which kind of research you are having. Okay, so most of the time we are having that applied research and fundamental research. It is based on the core knowledge. Okay, so there are different ways. That means either there is a descriptive research, analytical research, quantitative, qualitative, conceptual, and experimental. So whatever we are doing, being a computer engineer or a civil or mechanical engineer, we are generally doing applied research, or if you are focusing on to that core concept, then it is a fundamental result. But in both cases, you have to perform some experimentation. So that's why rather being a conceptual research, your research will be the experimental or empirical research. Remember this one. So you will comes under this, your research will comes under this experimental or empirical research category. Sampling. While collecting the data, it is most important that which kind of methodology you have adopted. So there are different types of sampling techniques which can be applied while initiating your study, either random sampling or non-random sampling. If we are talking about that non-random sampling, then these are the different techniques: quota sampling, accidental, purposive, expert, snowball, mixed sampling. You can get the information in net if you want to get the further information regarding this one. Then data collection. Data collection is most important. That means which kind of data you want to use in your research. Either that data is already available. That means when you have searched the number of papers now, at that time, you may have gone through the standard data sets. That means some researchers may have used standard data set. So either you can use that standard data set, or you can, if the proper data set is not available, then you can articulate your own data set. Okay, so in that way you can collect the data. So data collection is the process of gathering measurable and meaningful information. Okay, and while collecting the data, that data should be the proper one, which will give your proper research answers. Okay, collection can be in two different ways: either a primary data source or from secondary data source. Primary data source, as I already said, if you are articulating that data set by your own, by yourself, then it will be the primary data source. Or if you are taking or referencing the standard data set, then for example NIST data set of image processing, if you are referring, then it is, since it is a standard data set, then what you can do, it will be treated under secondary data source. Okay, so it's up to you which kind of data set you want to use or collect. Okay, primary data source can be collected by using the field notes, observations, interviews, and questionnaires like that. Now the last part of our session is statistical measures. While after selecting the topic, getting the proper problem, proposing the proper solution, and implementing the code, implementing your method, then you need to go for getting your results. So while while you want to get your results, you should use proper statistical measures. Okay, so there are different statistical measures or performance measures. By that way, you can produce the results in that way. Okay, which will be authenticated and which will be tested in the different way. So that statistical measures, most of the measures are based on the confusion matrix. You must know what is confusion matrix is.
It is most important topic. Okay. Before computing such kind of measures, it is essential to understand the concept of confusion matrix. It is what confusion matrix. It is a matrix that plots the amount of correct predictions against the amount of incorrect predictions. That means this is the ratio. It provides the ratio in between the correct and incorrect predictions. Okay, and you can see that parts in different ways. True negative. The abbreviation for it is TN, true negative, which predicted negative. That means you have predicted that predicted in a wrong way and it is actually negative. ठीक है, वो गलत है और आपने predict भी गलत किया. That means it's true negative. Okay. Then false negative, FP we called it as false positive. Sorry, false positive. It means predicted positive. That means you have predicted positive that particular item and it is actually negative. Okay, it is a false positive. Then false negative, you predicted it as a negative and it is, but it is actually a positive, and it is, the abbreviation for it for this false negative is FN. Then it is true positive. We have to mention all the means all the values here: true positive, predicted positive, and actual positive. Okay, one example I have mentioned here, which I have taken from one blog by Niels. Here you can see it provides the identification of hot dog. Identification of hot dog. So actual hot dog, if you can see, this is the hot dog. It is true positive. That means you predicted it as a hot dog, that particular sample as a hot dog, and actually it is hot dog. So it is called as true positive. Okay, look at this, true positive. Here, this is the part A image. Is it a hot dog? It is not a hot dog. That means the meaning of it is part A image indicates picture of pizza. It is pizza. It is not a hot dog. It is pizza, which is correctly labeled as not hot dog, because it is pizza. That means it is definitely not hot dog. Okay. Part 2, what it says? It is hot dog bun. You can see hot dog bun in that B part. You can see this B part. Hot dog bun it is, but this dog is there. It is false positive. Meaning is that it indicates a picture of a dog in a hot dog bun, which is incorrectly labeled as hot dog. Means because it is not a hot dog, but you predicted is in a wrong way. Okay, so false positive. It is false positive. This is what part C image indicates a picture of hot dog with sauerkraut and chili, which is incorrectly labeled as not hot dog. It is surely it is not hot dog. That means it is okay, but it is again it is not hot dog because it is having the different content. Okay, so in this way you can predict the values of the different tested samples, and you put all those values in the matrix, row and column. You can prepare row and column and you can put the values within that matrix. Once you get all those values, it will be treated as confusion matrix. That means you will get the values of TN, FP, FN, and TP. After getting all those values, then you will able to apply the different statistical measures or performance measures. Okay, the sample measures I have given here. For example, accuracy, the most important among all performance measures. आपका रिसर्च कैसे हुआ है ये अगर आपको पता करना है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है ये आपको पता करना पड़ेगा. So in that sense, accuracy is most important. So let's have a look at this. Accuracy is a measure for how many correct predictions your model made for the complete test data set. That means it describes the correct predictions, and the accuracy, this is the formula for accuracy, TP plus TN divided by, that means true positive plus true negative divided by all samples which is predicted. Okay, so this is accuracy. Accuracy is a good basic statistical measure to measure the performance of a model, as I already discussed. It works well in balanced data set, and in unbalanced data set it becomes poorer matrix. Okay, but in all way you must apply this accuracy statistical measure in your research, whatever it is. Okay, don't forget to add this one. Then second statistical measure is precision. Precision, it provides the ratio between the true positives to the total predicted positives, and
प्रेडिक्टेड पॉजिटिव में से कितने ट्रू पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव दो टाइप के रहेंगे, ट्रू पॉजिटिव एंड false positive, like that. So how many true positives are there among the whole predicted positives? So that is the definition of precision. Precision, TP divided by TP plus FP. Okay. Then precision is important when you want to become more confident about your predicted positives. It is useful when the occurrence of false positive is unacceptable or intolerable. For example, spam emails. You had rather have some spam emails in your inbox than miss out some regular emails that were incorrectly sent to your spam box. क्योंकि spam box में कुछ important mail भी कभी-कभी आ जाते हैं जो अपने inbox में नहीं रहते. So in that sense, you need to have all those parts. Then let's talk about another statistical measure. It is specificity. Specificity itself indicates the ratio of true negatives. Precision, it was regarding true positives. Okay, it was regarding true positives, while specificity, it indicates true negatives. Okay, so again the formula is same. Instead of this TP, we have used TL. It is important when you want to cover all true negatives. Okay, and it is used when you don't want to raise any false alarms. It is exactly utilized in that COVID-19 RT-PCR test. That means, for example, government is conducting RT-PCR test for identifying COVID-19 infected patient, in which all people who test positive will be immediately sent to quarantine. Okay, that means you don't you can't bear that false test in that RT-PCR. Otherwise, it gives a lot of pain to that person who has been positive, which means in reality he is negative. Okay, in that sense, it may give her too much pain. Okay, so that's why in RT-PCR test, specificity is most important one. Then recall, it is the ratio of true positives to the actual positives. Okay, and it is the measure of how many true positives get predicted out of all positive. Sometimes it is called as sensitivity also. F1 score, it is just like the mixture of or mean of precision and recall. It is a way to measure the model's accuracy based on the recall and precision. Okay, this is the formula for it. So this is all about what we have discussed throughout the session. Initially, we have discussed the knowledge of research areas and identifying the right interest. That means if you have a right interest, then you can go with the specific research or further research. How we have seen that how we can search the different papers on the authenticated and authorized resources, websites, journals, conferences, like that. We have seen that you need to visit all those websites for getting the papers. Following standard procedure of research using research design process. You must know that how you should you proceed for your research. So that research design process should be in your mind before proceeding for any kind of research. Then again, we have discussed that it's important to identify the suitable research methodology and research methods and techniques. Statistical measures we have discussed, which is need to use while incorporating the results in your report. Okay, so this is all about from my side. Hope you all understand all those parts. If any kind of questions you may raise right now. Thank you. And again, I want to thank to the organizers and especially Sneha ma'am, who have given me opportunity to talk in front of you and disseminate my knowledge among yourself. Okay, so thank you, Sneha ma'am. And again, definitely I'm happy to take the questions from students. Student, if you are having any query that how you can go with the how to select research topic, then Sanjay sir has given the mobile number. You can connect with him. And yeah, sure. If right now you are having any query, then please ask. You can ask any general question. No issue at all. Yes. हिंदी में भी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मैं पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जनरल है, यू कैन आस्क, क्योंकि थीसिस का काम यहीं से ही स्टार्ट होगा। सर ने बहुत अच्छी वेबसाइट्स बताई हैं आपको, बहुत सारे रिसोर्स उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जो आपको यूजफुल होगा 4 सेम में।
Please ask any questions. Indrajit, you want to say something? हेलो सर. हाँ यस बोलिए। मैम. एग्री सर. मुझे ये जानना था सर, जो न्यू आइडिया होते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है इनमें? अपने- सॉरी, न्यू आइडियाज क्या करना है? इम्प्लीमेंट कैसे करना है? अच्छा, न्यू आइडियाज इम्प्लीमेंट करना है। न्यू हाँ, आइडियाज जैसे इम्प्लीमेंट पता आई थिंक मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब कैसा कुछ आइडिया जो इसमें इम्प्लीमेंट कर सकूं मैं, वो समझ में नहीं आता. पेपर पढ़ लिया ठीक है, लेकिन कुछ 4 पेपर पढ़ लिए ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं खुद से क्या कर पाऊंगा उसमें, ये समझ नहीं आता. सही बात है सर। तो न्यू आइडिया आना ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज न्यू आइडिया इज इटसेल्फ अ नोवेल्टी एंड इनोवेशन. इफ यू हैव हैविंग दैट आइडिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, जो दिमाग में है पहले वो सर्च करो इंटरनेट पर, क्योंकि हम सोचते कि ये हमारे लिए न्यू आइडिया है. मैं एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ. मैंने कभी किसी जमाने में सोचा था यार अपने मोबाइल में एक ही सिम कार्ड है, लेकिन अगर मुझे मेरे मोबाइल में अगर 2 या 3, 2 से ज्यादा अगर सिम कार्ड होंगे तो और बहुत अच्छा होगा, मुझे कुछ ना कुछ यूज करते आएगा. फिर मैंने सर्च किया तो यस, देयर इज अ प्रोविजन टू हैव मोर देन 2 सिम कार्ड्स आल्सो, कि आइडिया ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है. जब मैंने सोचा कि एक रिसर्च ऐसे करना चाहिए कि थॉट प्रोसेस कैसे चलती है अपने दिमाग में, ये मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया था. तो मुझे लगा कि ये मेरा नया आइडिया है. जब मैंने देखा थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है, बट मैं जो करने जा रहा था, जो बेसिस में दे रहा था, वो नया है, न्यू है. तो फिर मैंने उसके ऊपर सर्च करना चालू किया, और फिर मुझे मेरा जो पीएचडी का थीसिस है वो कंप्लीटली इनोवेटिव एंड नोवेल निकला. ठीक है. तो आपके दिमाग में जब आइडिया आता है तो पहला काम क्या है, आप उस आइडिया को सर्च करो नेट के ऊपर, क्या उससे रिलेटेड क्या मिलता है. एक बार अगर वो मिल गया, उससे रिलेटेड मिलेगा, एग्जैक्टली वो नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिले, जो भी रिलेटेड मिलता है वहां पर देखो उन्होंने क्या यूज किया है, कौन से टेक्निक का यूज किया है. ठीक है. वो उनका डेटाबेस क्या है वो देखो. तुम खुद का कुछ नया बना सकते हो क्या, वो सोचो. एक रिसर्च डिजाइन प्रोसेस जो हमने डिस्कस की, उसके हिसाब से तुम एक एक पॉइंट ट्राई टू ऐड करो. तो डेफिनेटली नए आइडिया को तुम इंप्लीमेंट करने में तुम्हें बहुत मजा आएगा, और लिटरेचर सर्वे तुम्हारा उतना फिर अच्छा बन भी जाएगा उससे. सेटिस्फाइड? ओके सर जी, थैंक यू. ओके. सर एक जो प्रॉब्लम पेपर वगैरह दिव्या, चांदनी, आयुषी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? करुणा, खुशबू, अखलाक, मोनिका, नेहा, निहारिका, प्रीति, प्रियंका, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस? सर इमेज वगैरह जैसे हम बनाते हैं तो हाई क्वालिटी वगैरह के रिगार्डिंग अक्सर आता है कि हाई क्वालिटी इमेज आप यूज करिए. नॉर्मली हम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके उसके अंदर यूज करते हैं, या जैसे ग्राफ्स वगैरह होती हैं तो उसके अंदर भी हम लोग का अलग से ड्रॉ करने वाला कोई ऑप्शन नहीं होता. तो उसमें हाई क्वालिटी वगैरह हम कैसे इमेज डेवलप कर सकते हैं? कोई अलग से सॉफ्टवेयर वगैरह हो सकते हैं जहाँ पे हम ये ग्राफ्स और ये चीज़ें करके हाई क्वालिटी की इमेज कर सकते हैं? अच्छा बशीर, यह बात ऐसी है कि अभी मींस इट्स नॉट अ बिग डील टू मींस टू compress the image or to raise the resolution of the image. Means in today's world it's not a big deal. Simply what you need to do, just go for online. ठीक है. Search online that you want to resize the image or made the high resolution image. You will get the ample of links over there, and you upload your image and get that high resolution image. हो जाता है. एचडी में भी इमेज बन सकता है, तुम्हारा इमेज का साइज भी बहुत कम हो सकता है. ऑनलाइन टूल अवेलेबल रहते हैं, वैसे कर देने का, और हाई रिजोल्यूशन इमेज डाउनलोड कर लेने का. उसमें ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल रहते हैं, वो कर सकते हैं. यानी सॉफ्टवेयर ढूंढने से अच्छा अपने पास एकदम शॉर्टकट तरीका वो रहता है. मैं बेसिकली मैं खुद वो टेक्निक अप्लाई करता हूँ हमेशा. जैसे बहुत बार होता है ना, कैसे मैं ये यूपीएससी का अगर कोई फॉर्म भर रहा हूँ या फिर गेट का फॉर्म भर रहा हूँ, तो वो बोलते कि नहीं आपका इमेज इतने रिजोल्यूशन का नहीं है, 50 केबी में चाहिए, 200 केबी में ही चाहिए. अपना रहता है 1 MB का, तो उसको कॉम्प्रेस करना पड़ता है. तो वैसे फिर ऑनलाइन का यूज करके कर सकते हैं. ये इट्स अ मैटर ऑफ पिक्सेल्स, नंबर ऑफ पिक्सेल्स, हाउ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग इनटू दैट इमेजेस. सर रिव्यू पेपर के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा रिव्यू पेपर वाले जैसे अच्छा, एक रिव्यू पेपर कल, हाँ कल अपनी बात हुई थी रिव्यू पेपर के बारे में, नहीं क्या? यस जी. रिव्यू पेपर के बारे में क्या पूछना था आपको? रिव्यू पेपर के रिगार्डिंग माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट राइट नाउ? वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल, इज इट विजिबल टू यू? यस सर. यस सर.
ओके, सो दिस इज हाँ, रिव्यू पेपर क्वेश्चन पूछो, फिर मैं बताता हूँ उससे रिलेटेड एग्जैक्टली व्हाट इज योर इशू, बेस्ड ऑन दैट विल डिस्कस। हाँ बशीर। रिव्यू पेपर के अंदर किस तरह से हम थियोरेटिकली उसको करेंगे और एक्चुअल जब हम अपना इम्प्लीमेंट करके जब पेपर पब्लिश करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किस तरह से मतलब लिखा जाए उसको। ठीक है, चलेगा, मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, मेरा केस स्टडी बता देता हूँ आपको, उसमें से क्लियर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, मैंने जब मेरा लिटरेचर सर्वे किया तो कम से कम मैंने 150 पेपर मैंने पढ़े, उसका नोटिंग किया, नोट्स निकाले, उसके बाद मैंने कंपैरेटिव टेबल बनाया। मैंने मेरे पूरे पेपर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि थियोरेटिकल अप्रोच कितने पेपर्स में है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेड कितने पेपर्स में है, और मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उस टेक्निक से रिलेटेड कितने पेपर्स है। ऐसे मैंने 3 पार्ट में मेरे टोटल पेपर्स को ये किया। और वो तो पेपर बहुत सारे थे, जब हमें पेपर बनाना है तो इतने पेपर्स हम एक पेपर के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। तो उसमें से मैंने क्या किया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें से निकाले और उनको ही यहाँ पर प्रोजेक्ट किया। दिस इज माय रिव्यू पेपर, यू कैन सी रिव्यू ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस इज माय रिव्यू पेपर। हियर इन दिस पेपर व्हाट आई हैव डन, यू कैन सी this is the literature survey. Okay, within this literature survey this is my base paper. Okay, ये बेस पेपर में देखो, पेपर लिखना भी एक कला है, इसमें एग्जैक्टली क्या कैसे लिखना चाहिए आपको पता चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कंक्लूजन को देखिए और एब्स्ट्रैक्ट को देखिए, उन्होंने जो बताया है उसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में अगर आपने लिखा तो डेफिनेटली आपका ये पूरा पैराग्राफ बन जाता है। किसी भी पेपर को ले लो, इट्स इजी ट्रिक टू एड टू राइट अ लिटरेचर। पैराग्राफ कहाँ से लेना है, कंक्लूजन से लेना है। By that way you can get the clear understanding what they had done and what is their limitation and future scope. Most of the time these parts are mentioned in the conclusion. तो मैंने क्या किया, ऐसे कुछ पेपर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर मेंशन किया और उनका फिर यहाँ पर इस तरह से टेबल बनाया। फॉर एग्जांपल ये पेपर से, ये पेपर में कौन से मॉडल उन्होंने लिखे हैं वो उनका बताया मैंने, वो मॉडल उनका एप्लीकेशन क्या था ये लिखा, किसने स्टैंडर्ड डेटाबेस यूज किया, किसने खुद का डेटाबेस यूज किया ये यहाँ पर बताया। ठीक है, कौन से टेक्निक्स का अप्लाइड थियरीज, कौन से टेक्निक्स का यूज किया ये बताया। और फिर मेरा ओपिनियन क्या है, व्हाट इज माय ओपिनियन और व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन, इट इज माय ओन कंट्रीब्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में मैंने बताया कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मैंने क्या वहां से लिया। तो यहाँ जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पर used psychological terminology in its implementation, employs consciousness but no learning। मतलब अब मॉडल तो यूज किया है बट उसमें लर्निंग कुछ नहीं हुआ है, यानी लर्निंग जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ऐसे मैंने बताया। दिस इज माय ओन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरह से मैंने बहुत सारे पेपर से यहाँ पर बताया। इलस्ट्रेट द थॉट्स जनरेटेड प्रोसेस यूजिंग बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, यानी यहाँ पर इस पेपर में यहाँ से पता नहीं चलता यहाँ पर क्या है, बट मैंने जब पेपर पढ़ा तो मुझे दिखा कि एक बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के ऊपर कॉन्शियसनेस कैसे बनता है वो वहां पर बताया गया है। सो दिस इज माय कंट्रीब्यूशन व्हिच इज आई हैव मेंशन्ड इन दिस लिटरेचर। तो आपको ये बताना है व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि लिटरेचर सर्वे में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्निक के बारे में बताते हैं, तो वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा जो रहता है वो रिपीटेटिव डेटा रहता है, जहां पर प्लेगरिज्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो आपको आर्टिकुलेट करते आना चाहिए। ओके, सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर रिव्यू पेपर। satisfied with the answer बशीर? हाँ सर, ठीक है, ये होता है, ये इशू होता है कि मतलब रिव्यू पेपर बनाते वक्त क्या होता है, प्लेगरिज्म काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप तो सामने कहीं लेकर आप कुछ ना कुछ लिखने वाले हैं ज्यादातर। Your voice is not clear or audible properly. May you increase your volume? इट इज क्लियर। यही होता है सर, जब रिव्यू पेपर बनाने जाते हैं दूसरे पेपर्स वगैरह से आप जब कंटेंट लेते हैं तो आपके प्लेगरिज्म वगैरह का ज्यादा हो जाता है, तो अपना कंटेंट और वो चीजें कैसे मैनेज करें। तो यही मैंने आपको ट्रिक बताया कि प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए ना, ये बहुत इजी तरीका है। टेक्स्ट लिखते समय आप कंक्लूजन के ऊपर फोकस करो, वहां पर जो बताया है वो खुद के हिसाब से लिखो, इट विल डेफिनेटली रिमूव योर रिजॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ प्लेगरिज्म, and I have did it already. Any other questions?
Such a wonderful session, Gertie sir. I think my Thank you, student is now able to find out how they will going to select the research topic. And I'm looking forward for maximum thesis submission from this batch within 6 months. Thank you so Very much, good. Sanjay sir, for giving us such a Thank you, wonderful madam. knowledge. Thank you, madam, and all the best to all ME students. And definitely, I'm confident that they will go for the proper design process, research design process, and they will submit their project as per expectation of your guides and professors. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Sanjay. Thank you. Thank you.